प्रीवियस वीडियो हम सब ने फॉरवर्ड बायस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स करी थी। आज रिवर्स बायस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे प्लस एप्लीकेशन ऑफ डायोड एज रेक्टिफायर। तो लेट्स स्टार्ट। When it comes to the reverse bias, in a way it's opposite of the forward bias, which means what we do, first we select a PN junction diode. So reverse bias and characteristics. जब हम डायोड की बात करते हैं तो बेसिकली वी टेक अ पीएन जंक्शन डायोड। तो एक पीएन जंक्शन डायोड ले लेते हैं। हम जानते हैं डायोड में ये पी साइड, दूसरी साइड एन साइड, और पी साइड में देयर आर एक्सेस ऑफ होल्स, टुवर्ड्स एन साइड देयर आर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने अब करना क्या है, तो इसको कनेक्शन देनी है, यही इंपॉर्टेंट है। P side is connected with negative terminal and N side is connected with positive terminal. तो this is called reverse bias. Obvious सी बात है, अगर हम की क्लोज कर दें तो what will happen? After closing this key, we will observe that this negative terminal will be attracting all holes. So IH will flow towards the terminal. Likewise, electrons will be attracted towards the source. So this IE will be also coming towards the terminal. So what will happen? This diode resistance will start increasing and finally it becomes infinite. तो infinite होने के बाद क्या होनी है? तो these majority charge carriers won't combine to form major current or main current. लेकिन at the same time we call these P as majority charge carriers and N as majority charge carriers this side, which means towards P side there are few minority charge carriers, which is electrons. Towards N side there are few holes towards N side. So for these minority charge carriers, this reverse bias will act like forward bias. So they combine to form reverse current, and this can be shown with the help of this circuit diagram also. Like circuit diagram we had drawn for forward bias and characteristics. Everything in a way as it is. Only change we make is this source one. Here we connect negative with P side and positive with N side, and thus we get reverse bias and characteristics. This is ammeter, this is P side, this is N side, this is positive, this is negative, this is RH. Negative, positive, source voltage, key is closed, which means again PN junction, this voltmeter and this are in parallel, but over here this is P side is connected with negative and N side is connected with positive. And so what will happen? Because we want to show reverse current, so this will be in this third quadrant, and over here this voltage is called a Zener voltage, and we show this current as microampere, right? And we can explain the diagram also. The explanation could be
When we close key, we observe that initially with the rise in voltage, there is very less flow of current. But after a certain value of this voltage, which is called Zener voltage or avalanche breakdown, the avalanche breakdown takes place, which means the sudden rush of these charges takes place towards each other, and thus they combine to form reverse current. And this is all about this reverse bias and characteristics. On the basis of this reverse bias, we have a diode which is called Zener diode works. Zener, Z-E-N-E-R, right? Now, let us move on to the application of PN junction diode. When we talk about application, basically it is used as a rectifier, right? When we talk about rectifier, a rectifier can be of two types. First is, what is this rectifier? Rectifier basically a device which converts AC signal into DC signal, right? तो AC को DC में कन्वर्ट करने वाली ये डिवाइस है जिसको हम रेक्टिफायर कहते हैं. ये बेसिकली दो टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर. वन इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरे का नेम है फुल वेव रेक्टिफायर. ओके, पहले हाफ वेव को देखते हैं, फिर फुल वेव पे आएंगे. When we talk about half wave rectifier, it means which converts half cycle of AC input signal into DC, right? तो इसमें सबसे सिग्निफिकेंट बात है इसके डायग्राम. लेट्स हैव डायग्राम फर्स्ट. इसके डायग्राम हम कुछ ऐसे बनाएंगे. जिस स्पाइरल टाइप, ऐसे तो इंडिविजुअल अगर ये है तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज इंडक्टर. इंडक्टर है ये. अब इनके साथ में ही एक दूसरी इंडक्टर दे देते हैं. अभी भी ये मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन जब ये पैरेलल लाइन दोनों इंडक्टर के बीच में ड्रॉ करते हैं, मीन्स दीज टू आर इंडक्टिवली कपल्ड. और सेकेंडरी कॉइल में दिस इज प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल. सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स हम कम रखते हैं, व्हिच मीन्स these devices works at low voltage. And then let us have this PN junction diode, and then straightforward we connect over here a resistance that we call RL, load resistance. Through this load resistance we take output. Now if you do like over here लेटा हुआ S जैसा, जिसको हम बोलते हैं AC इनपुट सिग्नल, राइट? और डायोड है अपनी, और ये आउटपुट लेने का काम करेंगे यहां से. इसमें बेसिकली सिग्नल को डिवाइड करके पढ़ते हैं. AC मीन्स कुछ ऐसी जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल होती है इसमें. तो पॉजिटिव अलग, नेगेटिव अलग. तो कहते हैं
when positive half cycle is provided in input, it appears in secondary coil such that upper part of it is positive with respect to lower part. So diode is forward bias and hence current output is obtained across RL. इस तरीके से इसमें करंट आ गई. देन नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर बात करते हैं, कहते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल अपीयर्स, दिस इज इंड्यूस्ड इनटू द सेकेंडरी कॉइल, बट अब क्या होगी तो साइकिल चेंज होगी. सो अपर पार्ट ऑफ इट वुड बी नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू लोअर हाफ, लोअर पोर्शन ऑफ दिस सेकेंडरी कॉइल. तो अब क्या होगी, डायोड, दिस पीएन जंक्शन डायोड वुड बी reverse bias and hence no current output through RL. Thus, only half cycle of AC signal is rectified, so it is called half wave rectifier. Right? ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, इधर उधर की कोई कहानियां नहीं बनानी है. देन हम क्या करते हैं, तो इसको ग्राफ से कुछ शो करते हैं. ग्राफ से हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में एसी सिग्नल को लेते हैं, राइट. और फिर यहाँ पे हमने इसको कहते हैं I/P, इनपुट सिग्नल हो गई है हमारी. और यहाँ पे हम अब आउटपुट दिखाते हैं. तो ऐसे आउटलाइन और मार्किंग्स हमने बना ली, एंड देन इट विल हेल्प अस टू ड्रॉ द आउटपुट. अब क्योंकि पॉजिटिव साइकिल ही इसमें अपीयर हो रही थी, तो सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट दिखाएंगे, नेगेटिव वाला पार्ट छोड़ देंगे. लेकिन इस आउटपुट के साथ जो ये इनपुट हमने बनाई, इसमें भी अभी थोड़ा थोड़ा वेव ही जैसी है. इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी, राइट. पल्सेटिंग डीसी मतलब इसमें अभी भी कुछ एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसी कंपोनेंट इन आउटपुट, AC component present in output, it is called pulsating DC. So this was input and this is output, which can be rectified by filter circuit, जो कि RL या RC सर्किट से हम इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस AC इनपुट सिग्नल हाफ वेव रेक्टिफायर. अगर हम चाहे तो V0 के लिए हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. इट कैन बी I into RL. I बेसिकली क्या है, तो RMS वैल्यू ऑफ करंट है. तो RMS हम जानते हैं, इट कैन बी I0 बाय 2I0 बाय पाई होती है इनटू RL. लेकिन हाफ साइकिल ही रेक्टिफाई होती है, तो होल डिवाइडेड बाय 2, तो सो इट बिकम्स I0 बाय पाई इनटू RL. तो दिस वे, इस तरीके से हम आउटपुट वोल्टेज भी कैलकुलेट कर लेते हैं. सो दिस इज अबाउट द हाफ वेव रेक्टिफायर. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर करेंगे.